So good morning friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, here we are about to start the session. Here we are about to start the session here. So I'm sharing a link on our Telegram group. I'm sharing a link on our Telegram group. That link is basically your The Hindu analysis. Okay. So like it is written over there something called presentation 281, but that link is basically your The Hindu analysis. So, good morning all. We are about to start the session here. Just give me a minute. Priti, Mohit, Phoenix, Priya, Kapil, Rahul Raj, Anand, Yuvraj, Nikita, Mahik, Kirti, Plash, Prati, Harini, Tanuj, Pooja, Shivani, Avatar, Arti, Yuvraj, Gurseva. Good morning all. So let's start the session without wasting much time. You already have the PPT with you. Okay, so you can watch the PPT while this session uh, we are going to discuss here. So यहाँ पे पहली चीज जो मेजर आज न्यूज में आ रही है दैट इज दिस पर्टिकुलर पार्ट that Indian diplomats to boycott the Beijing Games. Okay, now this is the new development that has taken place. There has to be a reason here, and this is the right step. Okay, now what is happening? Western countries, they are already boycotting it. Western countries, they are not participating in this particular Winter Olympics that is going on in China. वो लोग पहले ही यहाँ पे नहीं आ रहे हैं because they had the concerns. Okay, they had the concerns that China is like going ahead with the human rights violation. So looking into that, they are not participating. तो वो लोग पहले से ही participate नहीं कर रहे हैं. This is what you need to understand. So now India thought that like somehow if we participate, we support China. So China may consider this as a goodwill gesture of India and may try to resolve the dispute that is going on in Galwan. तो गलवान में जो गड़बड़ चल रही है उसको शायद चाइना रिजोल्व कर देगा लुकिंग इनटू इंडियाज जेस्चर ओके बट यू नीड टू अंडरस्टैंड लुक एट व्हाट दीज चाइनीज हैव डन नाउ लेट्स see this in detail here. So here this is what you have to understand. This is the commander, okay, the Chinese commander. He is holding this torch. As you see on the screen, there is a like Chinese commander and he is holding the torch and he is moving ahead. Now you need to understand, China basically tried to politicize the whole issue, and this is one of the Chinese mind games, you can say. Okay, this is Chinese mind games that you can say, and China is trying to politicize the whole issue. पूरे के पूरे मामले को पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना अपना माइंड गेम खेल रहा है. ठीक है ना. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे समझनी है. And this is how these games are played here. And earlier in multiple sessions I have told you one thing, that this is the age of information warfare. Okay, आज की जो लड़ाई है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की है. द टुडेज फाइट इज अबाउट द परसेप्शन. Now this is what Chinese want to send a perception to the world community which will be present in the Winter Olympics. जो पूरी दुनिया के लोग आएंगे उनको ये मैसेज दे रहा है कि like China basically was on the upper hand. Now you need to understand, yesterday there was one report by Australian journalists. That report said that 38 Chinese soldiers, they lost their life. Okay, 38 Chinese soldiers, they lost their life. And it was also reported few things like today it was in news. If you watch NDTV, okay, it was there in the news that like those 38 soldiers, basically they were frightened. They were frightened as they were beaten up by the Indian army. Okay, इतना डर गए थे और डर के मारे वो डूब गए. This is the complete picture which was, you can say, told in that NDTV report. Okay, so now you need to understand, as I told you, this is the information warfare. This is the age of perception warfare. Okay, that you show, you portray this message that China was at the on the upper hand. This message can be to the world community,
as well as to the domestic Chinese community as well, okay, because Mr. Xi Jinping is under pressure. उनकी पोजीशन थोड़ी डाउन हो जाती है अगर ये पता लगता है that like people's PLA's soldiers, they have, you can say, they have been beaten by the Indian army, okay. So this is the point you have to understand. This is how the perception warfare is played here, okay. ये पूरी कहानी है. Now Indian spokesperson, like, they have categorically said that we will boycott, at least now Indian diplomats won't be participating in the opening ceremony. Doordarshan will not be like ब्रॉडकास्टिंग द होल सेरेमनी, ना तो वो सेरेमनी दिखाई जाएगी ना कुछ और होगा, ओके. दिस इज द फर्स्ट पिक्चर दैट इज कमिंग आउट एंड लाइक इंडियन स्पोक्स पर्सन हैज सेड दैट डेफिनेटली इट्स अ रिग्रेटेबल थिंग दैट चाइनीज साइड हैज चोजन द ओलंपिक्स टू पॉलिटिसाइज द होल मैटर, ओके, कि भाई पूरे के पूरे मामले को ओलंपिक में बैठ के वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं. नाउ यू कैन इजीली फिगर आउट द ट्रू कैरेक्टर ऑफ चाइना. आप चाइना और चाइना की गवर्नमेंट का ट्रू कैरेक्टर आप समझ लीजिए, ओके. We thought that if India is going to participate in Winter Olympic Games, then it will be a goodwill gesture to us, okay. But contrary to that, what they are doing is seriously regrettable, and this is what we have pointed out, okay. वही चीज हमने यहाँ पे बताई है. Now another news is related to High Court stays the Haryana job quota for locals, okay. You should be knowing this particular part. Haryana came out with the quota system that 75% of the jobs where the income is less than 30,000, जहां पे 30,000 से कम नौकरियां हैं, 30,000 रुपए, like this is the wage limit that is there. Below that, in those particular industries, in those particular sectors, 75% of the jobs should be reserved for the local Haryanvis, okay. So like this is the first state which is giving some sort of domicile based reservation, okay, कि भाई domicile people who will be having the Haryana domicile, okay, they will be able to like employed in those particular industry. Now this is a major point, and right now at the present point it is being observed that High Court is putting a stay over it, okay. आज की डेट में हाई कोर्ट इसके ऊपर स्टे लगा रहा है. This is the point you have to understand. They are saying that it is the complete, you can say, violation of Article 16 of the Constitution, okay, कि आप domicile नहीं लेके आ सकते हो प्राइवेट के अंदर, ठीक है ना. You have to treat people at par. People from different states, they should be treated at par, and specifically here in the private employment, okay. Now you need to understand one thing. This is the complete debate that is going on. Earlier as well, there was a major debate angle to that. What that angle was, industry was complaining about it that this is a regressive move taken up by the Haryana government. ये बहुत regressive move है जो हरियाणा सरकार ने लिया है, in the sense that now they are saying that talent will not be available. आपके यहाँ पे क्या लोकल हरियाणा के अंदर इतना टैलेंट मिल जाएगा जो which will be able to address the demand of the labor. जो लेबर शॉर्टेज चलती है, उतने टैलेंटेड, उतने स्किल्ड लेबर अवेलेबल होंगे. दिस इज द पॉइंट इंडस्ट्री इज मेकिंग, एंड इंडस्ट्री हैज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट दैट समहाउ they are going to face the crunch in the form of skilled labor. And apart from that, don't you think like these companies, they will choose to move out of Haryana, कि भी वो हरियाणा में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. देर आर नियर बाय एरियाज, यूपी इज ऑल्सो देयर, राजस्थान इज ऑल्सो देयर, एंड दोज पर्टिकुलर एरियाज, ओके, दे ऑल्सो हैव लाइक फैसिलिटीज एज गुड एज हरियाणा. एनसीआर तो उस एरिया में भी है. So this is what you have to understand. There are high chances that this may lead to moving out of industries from Haryana, specifically from Gurgaon and the Faridabad industrial hub. Okay, from there, like these industries can move out, and this is one such issue. So apart from this particular point of shortage of talent, okay, shortage of talent could be point. Another is about the other thing that is investment may move out of Haryana. Now this may set a bad trend. Now I am saying this particular part, other states will also start doing it. If this quota, okay, अगर ये चल जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर, if it has been like declared to be valid, in that scenario other states will also start doing it. Now you need to understand one thing, it will be a really difficult situation. आपके यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इट इज अलाउड टू कैरी आउट योर बिजनेस एक्टिविटी, बट हियर दीज स्टेट्स इफ दे स्टार्ट डूइंग इट, देन इट इज सीरियसली इट इज गोइंग टू बी अ रिग्रेसिव स्टेप. ओके, ये चीज समझने वाली है. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स, पॉलिटिकल गेम खेलने की बजाय हरियाणा शुड हैव वर्कड अपॉन इंप्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर.
अपने यहाँ पे गवर्नेंस को बेटर करो, अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करो, ओके, सो दैट लाइक इन्वेस्टमेंट शुड बी कमिंग टू योर प्लेस, आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सके, ठीक है ना। सो दिस इज द पॉइंट विच इज टू बी लुक्ड इनटू। गोइंग हेड विद दिस पर्टिकुलर मूव इज कंप्लीटली पॉलिटिकल, बताया जा रहा है कि ये तो पूरे तरीके से पॉलिटिकल है, ओके, स्पेसिफिकली फॉर द इलेक्टोरल गेन्स दिस पर्टिकुलर स्टेप हैज बीन टेकन। एक इलेक्टोरल गेन्स के अंडर लाइक ये स्टेप लिया गया है, बट आई सीरियसली डाउट दैट इट विल हैव एनी स्टैंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विल बी डिक्लेयर्ड अनवैलिड, ओके। आने वाले टाइम में बिल्कुल ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे समझ रहे हो। Other states may also start doing it, shortage of talent will be there, so these are the issues that will emerge. Now as I told you, like it requires that firms with 10 or more employees to reserve 75% of all the jobs, offering salary less than 30,000 a month for the eligible candidate of the state domicile, okay. So like even this will be stretched to the IT industry में भी ऐसा जो है ये stretch होगा, and like if there is any violation of this provision of act, it will be a punishable offense, okay. So there will be punishment that will be attached to it, and apart from that the local magistrate, आपके यहाँ पे bureaucrats को बहुत power दी गई है, ठीक है ना। the magistrates they will get lot of power to enforce this particular law. DC, DM, bureaucracy, they will be empowered out of it, okay. So it may lead to increase in corruption as well, यहाँ पे करप्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। सो दीज लाइक वी नो हाउ करप्शन हैपेंस, कोअर्सिव करप्शन होता है, दैट ऑफिसर्स दे मे स्टार्ट डिमांडिंग ब्राइब, ओके, फ्रॉम द इंडस्ट्री से ब्राइब लेना शुरू कर देंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग दैट हाई कोर्ट हैज स्टेड इट टिल नाउ। आज की डेट में हाई कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया है, ये अच्छी चीज है, ठीक है ना। सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। तमिलनाडु गवर्नर रिटर्न्स नीट बिल टू असेंबली, ओके। So here this is happening right now. Neet is again a major issue specifically with Tamil Nadu. Tamil Nadu don't want, you can say, to go ahead with the process enshrined in the Neet, okay, specifically for the medical seats. Medical seats के अंदर like Neet को bypass करने के लिए this bill was proposed, okay. So Neet is related to the like a test फॉर द सिलेक्शन ऑफ MBBS कैंडिडेट्स, ठीक है ना। उनके लिए ये एक अरेंजमेंट है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के अंदर, ओके। वर्ल्ड ओवर दिस मतलब मीन्स नॉट अक्रॉस द इंडिया, ओके, नॉट वर्ल्ड ओवर, अक्रॉस द इंडिया दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज यूज टू लाइक यू कैन से फिल द सीट्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ओके। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड इट टू बी अ वैलिड एग्जाम, और नीट ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है। In that sense, Tamil Nadu is trying to come out with this bill which will overdone or which will completely done away this particular arrangement of NEET. भाई वो वहाँ पे अपने यहाँ पे NEET के सिस्टम के थ्रू एडमिशन नहीं करवाना चाहते। And for this particular thing, like Tamil Nadu governor has sent that bill back to the assembly. Tamil Nadu assembly को वापस भेजा है, okay. So if the assembly again like comes out with the same bill without making any alteration, he will have no other choice apart from approving it, okay, ऐसा होगा। So this is the point you have to understand, ये गेम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। So Tamil Nadu had this system that your percentage of class 12th, okay, so whatever marks that you are scoring in class 12th, it will also have some weightage. This sort of arrangement they wanted, ठीक है ना। and multiple suicides have also been committed in Tamil Nadu, okay, if you see the last 2-3 years. So this is how the situation is right now. They don't want to be going ahead, they don't want to go ahead with the process of NEET, okay. तो ये एक प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या इस पे बात आगे बनती है। So this is the issue that is there. So here other than that there is nothing much now. IAS chief, okay, Ibrahim al-Hashmi al-Qureshi, he has been killed, okay, he has been killed in like this was the action done by the US special forces. So they attacked, and like we had this news that Abu Ibrahim al-Hashmi al-Qureshi, he has been killed in this particular, you can say, mission here, okay. So this is the only development, and definitely like it's a good thing. It will dent the spread of ISIS, so you must be knowing this. So right now Islamic State is also spreading to Khorasan province, okay, so which is in Afghanistan region, ठीक है ना। So ये एक नई organization निकल के आई थी, so there was a major threat to that, and if like this leader has been killed, it's a good thing, okay. So ये अच्छी चीज है यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना।
So you have to eliminate these terror organizations, specifically their leadership, and this was the right thing to do. Okay, so this is the point that is there, and definitely like these developments will also lead to, you can say, elimination of radicalization. भाई radicalization जो है वो यहाँ पे चला जाएगा. Now there is another point, the marital rape issue is still going on. So center is telling the high court that it requires more time. अभी इसके ऊपर और ज़्यादा टाइम इनको चाहिए, ठीक है ना. So they are saying that it is going to have a far reaching effect, okay, because the nature of the marriage itself will change after that. You are talking about like intervention by the state, okay. भी सरकार बैठी होगी in someone's marriage, police आके investigate करेगी and all. So this is a major issue. That's why like government is really going slow on this particular development. धीरे धीरे जाना चाह रहे हैं वो. They want an incremental approach कि धीरे धीरे चीज़ों को set किया जाए. Okay, so this is the point you have to understand. Other than that there is nothing much. So directly we'll move to the editorial section. सीधा editorial section पे आते हैं. So here this editorial is related to the like Galwan incident that has happened and the recent dispute that is going on in Ladakh region. Okay, so Ladakh region के अंदर जो पूरा मामला चल रहा है, dispute चल रहा है, you should be knowing it. There are different places that are activated. Okay, वहाँ पे जो है हमारे differences चाइना के साथ चल रहे हैं. Indian armed forces are neck to neck, or you can say face to face with China. So here we have, please have a look over this particular map. Now this is the area of Hot Spring, south bank of Pangyong Lake here, north bank of Pangyong Lake. Here we have differences. This is the Galwan Valley. We have the differences. Dapsang Plain. Okay, now this is one of the important areas, and this editorial is about Dapsang Plain only. ये पूरा का पूरा editorial आपका Dapsang Plain के ऊपर है, that what is happening over there and why this area is important. Okay, this is the point you have to understand. Now as you see on the screen itself, okay, just adjacent to Dapsang Plain there is something called Daulat Beg Olti, ठीक है ना. And this is, you can say, the airstrip that Indian Air Force, you can say, manages it. Okay, this is the airstrip. आपके लिए बहुत important है. Your like fighter jets, your big planes, they can take off from this particular airstrip. ठीक है जी, एक तो ये कहानी हो गई. Other than that, if you see this particular region itself, आप पूरे एरिया को ध्यान से देखोगे, so you will find that like this Dapsang Plain is quite nearer to the Siachen Glacier. अब ये सियाचिन ग्लेशियर के भी एकदम बिल्कुल पास में है. Along with that, it is also closer to the Karakoram Pass. Okay, Karakoram Pass. वहां से भी ये बहुत पास में है, ठीक है ना. So this is the complete map that you should have in your mind when you talk about India-China dispute. Okay, means those places are really very important. They have the strategic location. Okay, वहां पे strategic location है. What Chinese want, that if they are active on Dapsang Plain or they occupy certain area of Dapsang Plain, they will somehow have the upper hand in the sense that they will be in a situation to monitor the activities of Daulat Beg Oldi. उनकी इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि वो दौलत बेग ओल्डी को जो है ऑब्जर्व कर सके. ओके, before moving to this particular point, let me tell you few facts related to this India, China and Ladakh border here. Okay, please pay attention. Now you need to understand this particular area. This particular area is of Aksai Chin. Okay, this particular area is of Aksai Chin and this is already under China's control. ये ऑलरेडी चाइना के कंट्रोल में है. ओके, एंड दिस एरिया वाज ऑक्यूपाइड बाय चाइना इन 1962 वॉर. 1962 वॉर के अंदर ये सारा एरिया चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया था. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ऑन दीज पर्टिकुलर एरियाज नाउ चाइना इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट. ओके, दे आर मूविंग फर्दर वेस्टवर्ड. अब ये एरिया ऑलरेडी वो हड़प चुके हैं और उसके बावजूद भी वो वेस्टवर्ड मूव करना चाहते हैं. This is the important point you have to understand, and there we have this flash point going on. Okay, अब इस पूरे मामले को देखते हैं क्या है यहाँ पे. So delinking Dapsang. Now this is one of the important point you have to understand. Major fight is around Dapsang Plain only.
these planes are really very important, okay, and we will come to know that why these particular planes are important, वही इस editorial में बताया गया है. So if you look into the friction points that are there, okay, so all these places are mentioned: Dapsang, Galwan, Hopsing, Gogra, North bank of Pangyong से कैलाश रेंज एंड डैमचौक. ओके, ये इन पूरे एरियाज में हमारा जो है डिफरेंस चल रहा है चाइना के साथ. But major angle that has been observed is that China want to somehow like do away with the Dapsang plane. Dapsang plane को चाइना इस पूरे मामले से हटाना चाहता है. Before moving to this particular point, let me tell you how the Chinese strategy work. Okay, China has this strategy of 3 step forward, 2 step backward. 3 step आगे जाएंगे, उसके बाद 2 step पीछे आ जाएंगे. It means that there will be net gain of 1 step. Okay, there will be at least one net gain of 1 step, and this is the how the Chinese strategy works. Okay, they activated multiple areas, बहुत अलग अलग areas को उन्होंने activate किया. In few of them they will say that okay, we will restore the status quo or we will restore the situation which was earlier. भाई जो पहले situation थी वो हम वैसी की वैसी ला के रख देंगे इन एरियाज में. एंड इन 1 or 2 एरियाज दे विल से नाउ ये एरिया अब हमारे हो गए, अब हम मान गए हैं, देखो मैटर रिजोल्व हो गया है. बट इन रियलिटी इफ यू सी दे विल फर्दर गेन एट लीस्ट इन 2 एरियाज. दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट दे फॉलो. ओके, इतने सारे एरिया को उन्होंने एक्टिवेट किया, 3-4 जगहों पे बोलेंगे कि अब हम वापस चलते हैं, और एक आधा एरिया ऐसा होगा वेयर दे विल से दैट दिस इज नाउ चाइनीज टेरिटरी. ओके, सो दिस इज हाउ चाइनीज वर्क. As I told you, Dapsang plane, they are really very important here, okay, because you need to understand like Karakoram Pass is there. Now as I told you, what is the importance of Karakoram Pass? Karakoram Pass की major importance क्या है यहाँ पे? You can easily observe the activities of Chinese की आप activity observe कर सकते हो. कैसे? Suppose if there is a troop movement, अगर यहां से कोई ट्रूप मूवमेंट होता है, ओके, नाउ दिस इज द प्रोविंस चाइना हैज, अगर वहां से कोई ट्रूप मूवमेंट होता है, दैट ट्रूप मूवमेंट इफ ट्रूप्स हैव टू रीच अक्साई चिन, इट हैज टू पास थ्रू द कराकोरम. ओके, उस कराकोरम पास से होके जाना पड़ेगा. एंड दिस एरिया इज कंट्रोल्ड बाय इंडियन आर्मी हियर. इंडियन आर्मी के अंडर है वहां पे CHN ग्लेशियर इंडिया कंट्रोल करता है मेजर. ओके, वी कैन इजीली कीप एन आई ओवर देम, एंड दिस टाइप ऑफ लाइक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, this is what China wants to disturb. That's why they have occupied the areas on those Dapsang plains. Okay, ये Dapsang plain important क्यों है, and why India is really vulnerable on the Dapsang plain, you have to understand this point. Okay, now these are flat plains, okay, which are suitable for mechanized warfare. मतलब यहाँ पे टैंक चल सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे टैंक चल सकता है. मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स आर रियली वेरी फास्ट, बहुत फास्ट मूवमेंट होगा यहाँ पे. एट द इंडियन एंड द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गुड. प्लीज पे अटेंशन. ओके, इंडिया के एंड पे द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गुड, whereas on the Chinese side they have multiple roads that provide easy access to the area. बहुत इजीली वो वहां पे आ सकते हैं. ओके, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर. वी स्टिल लैक द इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू द टेरेन. बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सड़क बनाना इतना इजी नहीं होता. एट देयर एंड थिंग्स आर बिट इजियर, एंड दिस इज समहाउ दे आर हैविंग अ माइनर अपर हैंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. नाउ द पॉइंट हियर इज दैट okay, they are likely to gain much territory in a single swoop if this issue is not resolved. काफी उन्होंने डैप्सैंग प्लेन्स के ऊपर कब्जा किया है अभी रिसेंटली. इफ वी आर नॉट एबल टू रीस्टोर द स्टेटस क्वो इन डैप्सैंग प्लेन, इट विल बी अ मेजर लॉस फॉर अस. हमारे लिए काफी नुकसान होगा वो. ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज पर्टिकुलर एरियाज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज जस्ट हैव अ लुक द विसिनिटी. एक तरफ आपके इधर साल्तोरो रिज नजर आएगा, ओके, सियाचिन ग्लेशियर नजर आएगा, and you have this Shaksgam Valley as well. Shaksgam Valley, which was a territory of, you can say, Jammu and Kashmir, but was handed over to Chinese. अब ये Shaksgam Valley जो है ये चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था. So this particular area is important because you can definitely have a look over multiple places which are already strategically important, and we provided the Daulat Beg only, okay, where your aircraft can land. इतना बड़ा airstrip इतनी बड़ी height पे होना एक really बहुत बड़ी advantage है. This is the point you have to understand. ठीक है ना, ये चीज समझनी जरूरी है. ओके,
So definitely, like, depth planes are important for us. If India wants to carry out any type of mechanized एक्टिविटी, अब इंडियन टैंक्स को अगर आप मूव कराना चाहते हो अक्साई चीन के अंदर, ओके, दैट एक्टिविटी विल बी पॉसिबल ओनली थ्रू द दैप्सैंग प्लेन। वो एक्टिविटी सिर्फ दैप्सैंग प्लेन से ही हो पाएगी। दिस इज द इंपॉर्टेंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। सो राइट नाउ दिस इशू इज गोइंग ऑन, ओके, बट देर आर चांसेस दैट दे मे ट्राई टू डीलिंक इट। भाई बाकी जगहों पे मान जाएंगे, इधर नहीं मानेंगे, okay, if something like that happens then definitely it will be a loss for us, okay, ये हमारे लिए मेजर लॉस होगा। डेप्स एंड प्लेन को हम बिल्कुल भी नहीं खो सकते हैं, ओके। सो विल मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल विच इज अबाउट क्यूरियस केस ऑफ मेघालय's COVID-19 रिलीफ पैकेज, ओके। सो दे कैरिड आउट सम ऑफ द ऑडिट ऑफ द स्कीम्स अनाउंस्ड बाय द मेघालय चीफ मिनिस्टर एंड द मेघालय गवर्नमेंट। तो मेघालय की सरकार ने कुछ जो है स्कीम्स अनाउंस की थी टू प्रोवाइड रिलीफ टू द कोविड विक्टिम्स हेयर, कोविड जिनको असर कर रहा था, लाइक वर्कर्स, ओके, दे वर मेजरली जॉबलेस एट दैट टाइम बिकॉज लॉकडाउन था। सो मेघालय गवर्नमेंट लाइक अनाउंस सम ऑफ द स्कीम्स हेयर, ओके। नाउ इट वाज फाउंड दैट दो स्कीम्स वर no doubt announced, but their implementation was really very poor, okay. And the state government, instead of doing something, okay, they start making excuses. This is the point that has been mentioned in this editorial. ये चीज यहां पे बताई गई है, ठीक है ना। एंड ऑल वाज डन विद द हेल्प ऑफ आरटीआई। आरटीआई फाइल कर करके काफी इंफॉर्मेशन यहां पे इन्होंने निकाली थी। सो यू कैन डेफिनेटली लाइक राइट दिस पॉइंट इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन आरटीआई। आरटीआई पे क्वेश्चन आया तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन सेंट्रिक अकाउंटेबिलिटी नीड टू बी पार्ट ऑफ फंड सपोर्ट एंड डिसबर्समेंट। सो फाइनल कंक्लूजन दैट दे आर टेकिंग अप, ओके, फाइनल कंक्लूजन ये जो आपको समझ में आ रहा है वो ये है कि you have to assure that auditing का प्रोविजन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का प्रोविजन होना चाहिए, ओके, एंड देयर शुड बी सिटीजन सेंट्रिक अकाउंटेबिलिटी while dispersing the funds। किसी भी स्कीम के लिए अगर आप पैसा देते हो so make sure that accountability is assured, auditing arrangement is assured and transparency should be provided, okay। so this is the point that you have to understand। अब उसके अंदर आप इसका यूज करोगे। already we know this particular fact। Oxfam inequality report has pointed out कि कितना बुरा हाल है यहाँ पे, okay। In India, like definitely few people they have become rich during the COVID time, whereas majority they experience the reduced income, okay। उनकी तनख्वाहें कम हो गई। 4.6 crore like they are facing this acute poverty right now, okay। so this is how the situation is, this is how the situation is right now। now delivery system that have been allocated by the center and the states therefore become even more important। देखो बात कैसी है, when you are dealing with crisis at that specific time you have to make sure that whatever social assistance that is given by the government, वो social assistance बहुत एक तरीके से it should be very efficient, okay, it should be very efficient। but in India the problem is that your bureaucracy is highly inefficient, things are only there only on papers। भाई पेपर पे तो सब कुछ होता है but on grounds it is not visible at all। आपके यहाँ पे ग्राउंड पे कुछ भी विजिबल नहीं होता। this is the point you have to understand। so this auditing activity carried out in Meghalaya to look into like how the government have performed the schemes that they announced, whether those schemes are being implemented or not। so you need to understand when you carry out this public audit activity, okay, it promotes like transparency because information will be seeked from the government department through RTI के through information निकाली जाएगी and there will be an element of public participation। जनता खुद सवाल करेगी। this is the important point you have to understand, ठीक है ना। so as I told you major announcements were made by the Meghalaya government, okay, but there were some discrepancies in the implementation। अनाउंसमेंट होती है हमारे देश में, इंप्लीमेंटेशन बहुत पुअर होता है एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल। सो दिस इज द फाइंडिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट व्हिच सेज दैट ओनली 13% stated that they received the full amount that was mentioned, okay। so जितना अमाउंट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था सिर्फ 13% लोगों तक पहुंचा। 47 received nothing, ठीक है जी, जबकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स वर शोइंग दैट द अमाउंट हैज बीन डिस्पर्स्ड। सरकार के जो रिकॉर्ड हैं ऑन पेपर ये कह रहे हैं कि
पैसा निकल चुका है, बट पीपल आर सेइंग दे हैवंट रिसीव्ड एनीथिंग. दिस इज द पॉइंट. Nearly 80% people submitted individual grievances to the chief minister's office कि भाई हमारा पैसा नहीं आया, but still no action was taken. Okay. Now looking into these particular problems, instead of improving the situation, government attitude was of denial and obfuscation. सरकार काम करना ही नहीं चाहती है, सरकार ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि देयर वाज सम इशू. ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इफ यू वांट टू इंप्रूव. किसी भी चीज को इंप्रूव करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू एडमिट दैट देयर इज सम प्रॉब्लम. सबसे पहली चीज तो ये माननी होती है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, कि कुछ प्रॉब्लम है. पहली चीज तो आपको एडमिट करनी पड़ेगी, ठीक है ना. So if you are not admitting at the first point itself that this problem is existing, forget about correcting it. आप भूल जाओ उसको, कभी आप जिंदगी में करेक्ट नहीं करोगे. This is the point you have to understand here, and this is how our governments are behaving, and this should be improved. यही चीज इंप्रूव करने की जरूरत है. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इज गुड थिंग, ऐसे ही होनी चाहिए, और इसको आपको इंप्रूव भी करना होता है. ओके, सो here we have does budget delivers on the reforms. Okay, now in this editorial the major debate is about minimum government, maximum governance. Okay, minimum government, maximum governance. ठीक है जी. So this particular idea, minimum government, maximum governance, this particular idea was proposed. Okay, ये आइडिया मोदी जी ने बताया था हमें, ठीक है ना. So they are debating this particular budget whether it is in line with minimum government, maximum governance or not. वो चीज यहां पे इन्होंने बताई है, ठीक है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, व्हेन आई लुक इनटू द बजट, दिस वाज द क्वेश्चन इन योर 2017 मेंस. 2017 मेंस का ये क्वेश्चन है. yesterday also I brought this question in front of you, that this is how you have to prepare for yourself. Okay, they are saying that one of the intended objectives of union budget is to transform, energize and clean India. Now this was the objective way back in 2017. आज जो है इंडिया का जो बजट लेटेस्ट आया है, ओके, देयर ऑब्जेक्टिव इज अमृत काल, ठीक है ना. देयर ऑब्जेक्टिव इज समथिंग कॉल्ड अमृत काल. ओके, लाइक, और यू कैन से दैट प्रॉस्परस फ्यूचर, ठीक है, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करेंगे तो. सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट वन. ओके, so now this particular editorial that has been published in The Hindu, it is trying to look into this particular debate, whether what Modi ji said, minimum governance, minimum government, maximum governance. Okay, कि जो मोदी जी ने बोला था मिनिमम गवर्नमेंट होगी और मैक्सिमम गवर्नेंस होगी, whether that particular thing has been fulfilled or not. Before rushing to that, before jumping to this editorial, let me tell you one thing. This year the vacancies for UPSC has been increased. Okay, आपको ये मालूम होगा 861 वैकेंसीज इस साल आई हैं. So there are good chances that in the coming years as well these vacancies are going to increase further. So जब आप अपीयर होंगे, अच्छा चांस है कि आपके आते आते ये वैकेंसीज और भी इंक्रीज हो जाएं. Okay, this is the important point. Now if these vacancies are increasing, it means that government is looking forward to recruit more people, appoint more officers, और ऑफिसर अनाउंस अपॉइंट किए जाएंगे. ओके, सो इट मीन्स दैट लाइक डेफिनेटली इट इज नॉट मिनिमम गवर्नमेंट. भाई आप ज्यादा लोग एम्प्लॉय कर रहे हो तो मिनिमम गवर्नमेंट तो नहीं होगा ना. ऑलरेडी टुडे इटसेल्फ देयर इज अ न्यूज दैट लाइक लास्ट ईयर गवर्नमेंट रिक्रूटेड इन टोटलिटी इफ यू सी 78,000 इंडिविजुअल्स. ओके, पिछले साल 78,000 इंडिविजुअल्स को सेंटर ने एक तरीके से नौकरी पे रखा है, ठीक है ना. दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ द डिबेट इज दैट वेदर द बजट that was announced, whether budget supported this minimum government, maximum governance. So this is the point they are saying, and they are saying that this is difficult objective to achieve in India because government has the prevalence all sectors. Government has the prevalence across all sector in all areas. Okay, this is the present situation that is there. ये चीज समझनी जरूरी है. But you need to understand, this is the new global trend. Okay, what this new global trend says, that globe over there are bigger governments that are emerging. पूरी दुनिया के अंदर सरकारें जो हैं अपना साइज बढ़ा रही हैं, ठीक है ना. This has been observed. Okay, so contrary to that, if you see the present budget that we have, आपका आज का बजट जो है, so they are saying that
We are continue to take strides towards becoming more private sector oriented economy. कि दुनिया जो है गवर्नमेंट का रोल बढ़ा रही है एंड इंडिया ऑन कंट्रेरी टू दैट इज समहाउ मूविंग टुवर्ड्स मोर प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी. ओके, ये चीज इन्होंने यहां पे बताई है. Why it is saying that? Because if you see the latest budget that is carried out, okay, so initially government is saying that it is going to spend 7.5 lakh crore as capital expenditure. That will be primarily done to make sure that आपके यहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट मिले. ओके, दिस इज द पॉइंट. एंड इफ यू लुक इनटू द इंक्रीज इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो सैलरीज और पेंशन का होता है, देर इज जस्ट 1% इंक्रीज, सिर्फ 1% इंक्रीज किया गया है. दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू मिनिमम गवर्नमेंट हियर, द मेजर आइडिया इज दैट द गवर्नमेंट विल रोल बैक एंड विल रिड्यूस द फुटप्रिंट ऑफ पब्लिक सेक्टर. भाई सरकारी सेक्टर जो है वो कम हो जाएगा. एंड वी हैव सीन एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन. ओके, दिस इज वन ऑफ द स्टेप यू कैन से ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस. सरकार ने पूरी की पूरी सरकारी कंपनी बेच दी. नाउ दे आर सेइंग दैट बट इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू डिसइन्वेस्टमेंट. आपने मिनिमम गवर्नमेंट जो है वो प्रॉमिस तो किया, बट व्हाट इज योर ट्रैक रिकॉर्ड? Your track record says that you are not good at disinvestment. We have not been able to achieve our targets. जो भी टारगेट हम रखते हैं वो टारगेट हम अचीव ही नहीं कर पाते हैं. दिस इज द पॉइंट दैट हैज बीन रेड एंड दिस इज द वैलिड आर्ग्यूमेंट. ओके, आपके यहाँ पे बैंक्स के अंदर भी हमने कुछ कुछ सोचा था. देयर वर अदर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विच वर टू बी प्राइवेटाइज्ड, विच वर टू बी डिसइन्वेस्टेड, बट नथिंग हैज बीन डन. उसके अंदर कोई भी काम नहीं किया गया है. ठीक है ना? दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. Now, one of the major push that your government is making is to go ahead with digitized government process. भाई आप digitization को बढ़ा रहे हो. It's a really good thing. Okay, no doubt there are private concerns, there are data concerns. We don't have a data protection law in this country. आपके देश में आज भी कोई data protection bill, data protection law available नहीं है. Okay, so we are going ahead with the digitization. हम जरूर digitization की तरफ चल रहे हैं. There is a risk as well, but still it is somehow contributing to reducing the size of the government. सरकार का साइज तो कम हो रहा है उससे. No doubt environmental clearances are given in a digital mode without even analyzing the things on the ground. चीजों को ग्राउंड पे देखे बिना आप डिजिटली जो है क्लियरेंसेस देते जा रहे हो. दैट इज द पॉइंट. समझ में आती है वो चीज, बट स्टिल इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू मिनिमम गवर्नमेंट. ओके, बट गोइंग अहेड इन दिस वे इज सर्टेनली नॉट द राइट वे. अगर आप इस तरीके से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस लाना चाहते हो, सो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू दैट. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट ओके देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स. वो तो हर डिपार्टमेंट में है यहाँ पे, तभी शायद जो है नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज की गई हैं. एंड इन द कमिंग ईयर्स इट मे बी इंक्रीज फर्दर. ओके, इफ यू सी द फ्रॉम लास्ट 3 years कुछ खास सीट्स नहीं आ रही थी, बट दिस टाइम गवर्नमेंट इज डूइंग दैट. इट्स अ गुड थिंग. So this is what we have in this particular editorial debate. Now we'll move to the next part. आगे चलिए. US says it does not endorse remark on foreign policy. अब ये remark किसका है? राहुल गांधी जी का remark है. So राहुल गांधी जी ने कल कहा था that India is isolated. Okay, India is isolated. अब ऐसा बोलना क्या ये सही है? First of all, either he is ill informed. Okay, you need to understand one thing. We are having good relation with United States. We are having good relations with Russia. दोनों के साथ तो हमारी इक्वेशन अच्छी है. How can we say that India is isolated? Certainly not. You need to understand one thing. Like in international relations, there are some balances that are to be maintained. अब देखो, US के लिए पाकिस्तान भी important है and India is also important. For US, Pakistan is also important and India is also important. That doesn't mean if US is engaging with Pakistan और वो engagement anti India होगी, ऐसा नहीं होता है. Okay, so US engagement with Pakistan, you cannot say it is anti India, and this is what has been clarified here. यही चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है. ठीक है ना? So they are also saying that we do provide choices. So if India considers that US is good for him, तो इंडिया ने यूएस के साथ अच्छा रिलेशन बनाया है, बट यूएस इज हैविंग नो प्रॉब्लम इफ इंडिया इज हैविंग गुड रिलेशंस विद रशिया.
तो इंडिया यूएस और रशिया दोनों के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बना के रख सकता है. यू कैन नॉट से दैट इंडिया इज आइसोलेटेड एट ऑल. ओके, आप बिल्कुल भी इस चीज को नहीं बोल सकते हो. This is the point US spokesperson have clarified. Now, as I told you, 78,000 central government recruitment were made. Okay, so this is the point that you have to understand. But if you look into the vacancies, there are still lot of posts that are vacant. आपके यहाँ पे एक double irony चलती है. If you talk about any department, there is shortage of staff. अगर आप बात करते हो हर डिपार्टमेंट में shortage of staff है, people are not available. Okay. Simultaneously there are tremendous vacancies that are also there. बहुत सारी vacancies हैं आपके कंट्री में. So number of vacancies, if you talk about, it stood at 8.72 lakh on March 1 2020. Now we say that we are a youthful nation. Okay, so your officials are retiring. आपके यहाँ पे officials retire हो रहे हैं, but we are failing to complete the process of recruitment. New recruits को रिक्रूट करने का प्रोसेस बहुत स्लो है इंडिया में. यूपीएससी इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, यूपीएससी सबसे एफिशिएंट है. दैट्स व्हाई इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम इट हैज बीन एबल टू कंडक्ट द एग्जाम. यहां पे एग्जाम किया जा रहा है. एंड इफ यू लुक इनटू द अदर एजेंसीज, सब पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं. दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो से यस, लास्ट ईयर देयर वाज हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम. पिछले साल हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकला, बट पेपर वाज लीक्ड. पेपर लीक हो गया वहां पे. ओके, सो दैट होल एक्सरसाइज हैव टू बी कैरिड आउट अगेन. एंड राइट नाउ द मैटर इज सब जुडिस. अब वो कोर्ट में है मामला. ना तो मेंस का एग्जाम आगे हो रहा है और ना ही ये पता है कि नेक्स्ट ईयर क्या एग्जाम होगा. So this type of problem is existing in India. So apart from UPSC, rest all these recruitment agencies, they are really performing bad. यहां तो सिर्फ सेंटर की बात हो रही है. वैकेंसीज देखो, 8 लाख वैकेंसीज. लुक एट द सिचुएशन हियर. ठीक है ना. सो दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो एवरी ईयर यू आर रिक्रूटिंग लेस नंबर ऑफ पीपल. बहुत ही थोड़े लोग आप रिक्रूट कर रहे हो. ओके, डेफिनेटली इट इज एज पर द पेइंग कैपेसिटी. अब सरकार के पास सैलरी और पेंशन के पैसे नहीं होंगे तो ये तो होगा. एंड इट इज क्वाइट अंडरस्टूड दैट ड्यूरिंग द कोविड टाइम देयर वाज अ ड्रेन एट द, लाइक यू कैन से, रेवेन्यू लेवल. पैसा नहीं आ रहा था गवर्नमेंट के पास, समझ में भी आता है. बट वैकेंसीज तो भरनी जरूरी है. ओके, सो दीज शुड बी फिल्ड ऑन टाइम एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ एज वेल. भाई बहुत जनता यहाँ पे मेहनत करके इन एग्जाम्स की तैयारी करती है. सो गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दैट. ठीक है ना. So this is the point that is there. This is the point that is there. Other than that, there is nothing much on this page. So we'll move to the next part. आगे चलते हैं. So here we are moving ahead now. Now Chandrayaan 3 set for launch in August. अब ये Chandrayaan 3 जा रहा है अगस्त के अंदर. Okay. So this is the point you have to understand. Like देखते हैं इसके अंदर क्या हमारी काम की इंफॉर्मेशन है. So in this particular launch, GSLV Mach 3. This particular launch vehicle will be used. Okay, GSLV Mach 3 will be the launch vehicle that will be used. Here are some properties of GSLV. So this is having the capacity greater than the PSLV. PSLV से ज्यादा capacity होती है इसके अंदर. It is the most successful launch vehicle. Okay, जो हमने बनाया है. It can launch heavier communication satellites. उनको launch कर सकता है ये. It can launch heavier multi-purpose satellites as well. अब देखो हमारा जो गगनयान मिशन चल रहा है, ओके, इन विच वी आर गोइंग टू सेंड आवर एस्ट्रोनॉट्स, देन इन दोज पर्टिकुलर थिंग एज वेल वी विल बी यूजिंग द GSLV इंजन, क्योंकि इसकी थर्स्ट कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा भार ऊपर ले जा सकता है. इट कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन. दिस इज ऑल्सो इट्स क्वालिटी. ओके, द लॉन्च फ्यूचर क्रूड मिशन. दिस इज द पॉइंट. जो गगनयान मैंने बताया, टू कैरी ह्यूमन टू स्पेस, दिस विल बी डन थ्रू दिस ओनली. ठीक है जी. दिस इज द पॉइंट. It is designed to carry satellite weighing 4 ton into the geosynchronous transfer orbit. 4 टन का सैटेलाइट ये जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज सकता है. ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट दूर तक. इट कैन कैरी सैटेलाइट वेइंग 10 टन टू द लोअर अर्थ ऑर्बिट. ओके, अब 600 किलोमीटर तक भेजना है तो 10 टन का भी सैटेलाइट ये उठा सकता है. So this is the information that is there related to GSLV Mark 3.
दिस इज द वर्क होर्स, ओके, ये वर्क होर्स है और इसके अंदर हम विकास इंजन यूज करते हैं, ठीक है ना। द इंजन दैट विल बी यूजिंग इज विकास, उसका नाम है विकास, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट यू शुड हैव रिगार्डिंग जीएसएलवी। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे चलते हैं। देखिए इंटरनेशनल न्यूज के अंदर, सो IAS chief blows himself amid the US raid, this is what happened, okay। so अपने आप को उड़ा दिया, so this is a good thing, we already covered this। चलिए, now like Jaffna fishermen hold protest opposing the Indian trawling। अब ये मेजर इशू है जो यहाँ पे आ रहा है। देखो, you need to understand one thing here, like yesterday also I told you this particular point, ये जो जाफना एरिया है, okay, this is somehow you can say the northern part of श्रीलंका है, ठीक है ना। there majorly Tamil people live। Earlier there was a civil war in Sri Lanka which ended in 2008। अब 2008 के अंदर वो सिविल वॉर एंड होता है। अब वॉर लड़ रही है जनता, तो फिशिंग तो क्या करेगी, ओके। सो लेटर ऑन व्हेन देयर वाज एंड टू दिस सिविल वॉर, द इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्टेड एंड the fishermen in this particular region as well, they also started fishing। अब ये लोग भी फिशिंग करने लग गए, ओके। What was the situation earlier? Before that, it was only Indian fishermen which used to fish in those water। और इंडियन फिशरमैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दे यूज बिग ट्रॉलर्स, बड़े बड़े ट्रॉलर जो हैं ये यूज करते हैं, मैकेनाइज्ड इनका सिस्टम होता है इंडिया वालों का। एंड दोज स्मॉल यू कैन से फिशरमैन फ्रॉम श्रीलंका, देयर they don't get the fishes। and now this area is in श्रीलंकन वाटर। ये पूरा का पूरा एरिया जो है श्रीलंका की टेरिटरी में है, मैरीलैंड मैरीटाइम बाउंड्री उनके अंडर है ये, ओके। Earlier there was Kachativu island dispute, this island dispute has been settled and now it is part of Sri Lanka। अब ये मैरीटाइम बाउंड्री तो बन गई, बट इंडियन फिशरमैन दे आर स्टिल फिशिंग इन दीज पर्टिकुलर एरियाज, और आते हैं और बहुत सारी मछली ले जाते हैं। what is the outcome of that? That Sri Lankan fishermen, they don't get anything, and this is the major issue which is going on between India and Sri Lanka। so whenever you discuss about India Sri Lanka relations, okay, जब भी आप इंडिया श्रीलंका रिलेशंस की बात करते हो, दिस फिशरमैन इशू इज स्टिल पेंडिंग। ये फिशरमैन इशू आज भी चल रहा है। अब सिविल वॉर जब चल रहा था, इंडियन फिशरमैन देयर वाज नो वन टू स्टॉप देम, कोई भी उनको रोकने के लिए नहीं था, तो एकदम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन दे यूज्ड टू कैरी आउट देयर फिशिंग एक्टिविटी। बट राइट नाउ श्रीलंकन नेवी इज रेगुलरली टारगेटिंग देम, श्रीलंकन नेवी अब उनको अरेस्ट कर लेती है। सो दिस इज हाउ द प्रेजेंट सिचुएशन इज राइट नाउ। ये एक मेजर गड़बड़ चल रही है जो हमारे बीच। व्हाट इज द सॉल्यूशन? Solution is that both the government should sit there and decide that what will be the outcome। दोनों आपस में मिल बैठ के बात करें। Later you need to understand something have to be done for the Sri Lanka और Tamilian fishermen as well। जो तमिलनाडु से फिशरमैन वहां पे जा रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, okay। you have to provide them some alternatives, otherwise they will keep on using this particular big trawling machines और वो फिशेस को लेके जाते रहेंगे। दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Now I would like to tell you something, there is something called Meena Kumari committee, okay, please write it down, Meena Kumari committee। Meena Kumari committee is on fishing। फिशिंग के ऊपर मीना कुमारी कमेटी है, दैट हाउ यू हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन फिशरीज, ओके। फॉर देयर रिफॉर्म्स मीना कुमारी कमेटी इज देयर। सो इन योर आंसर, इवन इफ यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन से फिशरीज, फिशिंग इंडस्ट्री के ऊपर अगर आप आंसर लिख रहे हो, देयर इटसेल्फ यू कैन मेंशन अबाउट द मीना कुमारी कमेटी रिकमेंडेशंस, ओके। सो दिस इज व्हाट यू कैन मेंशन देयर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आगे देखिए, रशिया डिप्लॉयज मोर ट्रूप्स इन बेलारूस, ओके। सो प्लीज पे अटेंशन, दिस इज द बेलारूस रीजन। एट वन एंड यू हैव रशिया, नीचे यूक्रेन है, साइड में पोलैंड है, इधर लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ओके। The region itself is under trouble right now because earlier also Belarus was in news। there were protests, okay, that were carried out against the leadership के against protest काफी ज्यादा हुए थे यहाँ पे। and apart from that you need to understand what is the latest development that has taken place। the latest development is that United States, okay, United States have deployed troops। यूएस ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं इन सम ऑफ द कंट्रीज, एंड वन ऑफ द कंट्री इज पोलैंड। पोलैंड में अपने थोड़े ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं यूएस ने, ओके। दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई रशियंस हैव इंक्रीज्ड देयर प्रेजेंस इन बेलारूस। अपार्ट फ्रॉम दैट द इशू इज स्टिल गोइंग ऑन इन यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर अभी भी मामला गड़बड़ चल रहा है, ठीक है ना।
The presence of US troops, US boots on the ground has not been taken in a right way by the Russian president. Okay, व्लादिमीर पुतिन ने इस चीज को, इस डेवलपमेंट को बिल्कुल अच्छे से नहीं लिया है. दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन राइट नाउ. ये एक मेजर क्राइसिस की सिचुएशन है. नाउ इफ ट्रूप्स आर डिप्लॉयड, a minor incident of distrust can lead to a full fledged war. एक छोटा सा इंसिडेंट पूरे वॉर में कन्वर्ट हो सकता है. We have seen this multiple times. Okay, so that's why this type of situation is really sensitive over there. Both the parties, Russia as well as the NATO countries, they are increasing their presence. अपनी presence को वो बढ़ा रहे हैं. This is the important point you have to understand. Okay, this is the present development that is there. So we'll move to the next part. आगे चलते हैं. So like PMI reflects further easing in service activities. Okay, so business confidence right now is 6-month low. तो थोड़ा business confidence down है, and primarily like you can figure it out. पिछले 2 महीने के देखेंगे, if you see the 2 months, past 2 months, primarily it was the like Omicron wave only. एंड व्हेन वी से सर्विस एक्टिविटी, सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, तो वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री दैट हैज बीन इंपैक्टेड, दैट इज योर टूरिज्म इंडस्ट्री. अगर आप देखो टूरिज्म इंडस्ट्री रिवाइव नहीं हुई तो इट विल बी अ मेजर, यू कैन से, प्रॉब्लम, बिकॉज टूरिज्म इंडस्ट्री इज वन सच बिग इंडस्ट्री विच इज एम्प्लॉइंग करोड़ ऑफ पीपल. करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है. ओके, so this is the important point you have to understand. And citing this reason as well, government has also said that it will continue to provide support to it. इस इंडस्ट्री को सरकार अभी भी थोड़ी सपोर्ट देती रहेगी क्योंकि जरूरत भी है. ठीक है ना, थोड़ी जरूरत भी है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू लुक इनटू. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. नाउ नो रैशनल फॉर लोअरिंग 30% ऑफ टैक्स ऑन क्रिप्टो प्रॉफिट्स. ओके, सो yesterday there were a lot of memes that were going on social media. बहुत सारे memes फैले हुए थे. Like people were dancing who have not invested in crypto. 30% का टैक्स लगा दिया तो मतलब आपका मेजर चंक तो सरकार ही ले जाएगी. ठीक है ना. सो दिस इज हाउ समथिंग विच इज नॉट गुड. ओके, but other than that there is nothing much on this particular paper here. So that's it for the day then. Thank you very much. Have a great day ahead.